ठीक है, आप बताओ, ये कुछ समझ में आ रहा कि हाउ दिस connections of the technology of battery. Before lunch we are sharing the SCADA technology and after lunch we are sharing the battery technology. क्या जिंदगी है भाई, टेक्नोलॉजी के साथ इतना क्यों हम लोग ज्यादा है? क्या है ये सब टेक्नोलॉजी है? जनरल बैटरी टेक्नोलॉजी क्या है? बैटरी मतलब क्या होता है, एंड उसका भी टेक्नोलॉजी क्या है इंद्रनील, थोड़ा बताओ ना। हाउ फॉर योर कनेक्शन विद द बैटरी, कैसे जानते हो बैटरी को क्लोजली? जस्ट डिस्क्राइब विद सडन सेंटेंस कि आज के डेट में आपका क्या कनेक्शन रहा। एक बैटरी को क्लोजली हमने देखा, कुछ किया, एंड वो आपको एक एपिसोड बना कि बैटरी आई नो इट वेल, वेरी वेल या वेल। कभी होता है ना, पाला पड़ता है, कभी पेन होता है, कभी कनेक्शन में आता है, जरूरत पड़ता है, तो जरूरत से आदमी सीखता है। हुआ था 2015 में, एक साइड जो फैमिली और गया। कहाँ पे? एक साइड जो आपको स्लाइड दिखा रहा है, जिस एक साइड में आप गया था। अच्छा, क्या है? 2015 में ठीक दिखा है। रहा था, तब तो उतना नॉलेज नहीं था, मतलब 15 में डिप्लोमा कर रहा था। कहाँ पे गया था, विच एरिया? सैमनगर, वेरी गुड। वहाँ पर दिखा रहा था ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप उसका मन है, लेकिन उतना तो याद नहीं है, लेकिन दिखाया था ऐसे ऐसे होता है, सल्फ्यूरिक एसिड डालता है। हाँ, राइट। ऐसे करके उनका है चेंबर है, बड़ा बड़ा दिखा रहा था उनका। तब उनका एक पैर आया लास्ट में, थोड़ा थोड़ा करके बोला। 1 आवर हुआ था, 2 आवर्स। ठीक है, बट टाइप एंड अदर्स यू हैव नो आइडिया कि लेड एसिड क्या है, निकल कैडमियम क्या है, या लिथियम आयन क्या है, एनी काइंड ऑफ आइडिया, बेसिक्स। वी आर नॉट आस्किंग और डिस्कसिंग द एडवांस लेवल। टेक्नोलॉजी छोड़ दो ना अभी। व्हाट इज लेड एसिड, या व्हाट इज निकल कैडमियम, या व्हाट इज लिथियम आयन? ये इसका साथ मतलब बैटरी का क्या संबंध? बेसिक फॉर्मूला कुछ है? एनी केमिस्ट्री? सर इलेक्ट्रोड्स हैं। बताइए अमन, आप क्या बोलना चाहते हो, थोड़ा ब्रीफ करो। हाउ दी बैटरी, लेड एसिड बैटरी में इलेक्ट्रोड में लेड यूज होता है, और केमिकल जो होता है H2SO4। ऐसे निकल कैडमियम इलेक्ट्रोड्स यूज होती हैं। मेरा क्वेश्चन है बैटरी का साथ इनका क्या रिलेशनशिप है, क्या मिलता है आपसे? व्हाट इज द कनेक्शन बैटरी का एंड रिलेशंस विद द बैटरी एंड द लेड एसिड? थोड़ा केमिकल रिएक्शन का साथ बताओ, अगर पता है तो फुल्ली बताओ, नॉट पार्शियली। फंडामेंटल आइडिया मस्ट बी क्लियर। ऐसे संबंध होना चाहिए, कोई आधा अधूरा कोई फायदा नहीं है कि सर अंदर एक इलेक्ट्रोड हमने देखा है कभी, ना तो मेरे को स्पेसिफिकेशन पता है, ना लेड एसिड। व्हाट इज लेड एसिड? सर लेड इलेक्ट्रोड और H2SO4 एसिड की कॉम्बिनेशन से बैटरी बनेगी। देन क्या होगा सर? मतलब बैटरी से वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, जो जनरेट होगी वो आगे डीसी सर्किट में दी जाएगी। तो बैटरी है क्या भाई? लेड एसिड और लिथियम क्या फर्क है? और ये अदरवाइज ये दोनों ही बोलो फास्ट, निकल कैडमियम और ये क्या फर्क है केमिकली? हाउ दी सर केमिकल? इलेक्ट्रोड्स डिफरेंट है। इलेक्ट्रोड्स और जो कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जो यूज होता है वो डिफरेंट है। बस तो यही जरूरी है सर सबसे ज्यादा। अच्छा, ये तो सारे डिफरेंट है, 5 दिखा रहा है, पांचों डिफरेंट। हाँ हम कहाँ यूज करें, कहाँ ना करें? वो हाँ जी सर, वो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ 5 क्राइटेरिया होते हैं उसके, परफॉर्मेंस, कॉस्ट, बैटरी तो उसके हिसाब से देखी जाएगी कौन सी यूज हो रही है। लेड एसिड कहाँ यूज होता है नॉर्मली? व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ लेड एसिड एंड वेरी मच पॉपुलर? यस, होम में यूज होता है सर, होम में। होम क्या? होम घरों में यूज। ठीक है, निकल कैडमियम, एनी आइडिया? अगर आइडिया है तो बोलो, रैंडमली बता सकते हैं कोई? तो बैटरी बैंक्स बनते हैं इसके। बैटरी बैंक? हाँ जी। ये सारे ही सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल कपल्स दिखा रहा है आपको कि वर्ल्ड वाइड इज पॉपुलर। ऑल दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बट डिफरेंट एप्लीकेशंस।
इसका एप्लीकेशन अलग, इसका एप्लीकेशन मोस्टली ऑल आर डिफाइंड, ऑल 5 आर द सेकेंडरी इलेक्ट्रोकेमिकल कपल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जो हम दिखाएंगे. दिस इज द पर्टिकुलर पैटर्न्स, इंडस्ट्रियल, पोर्टेबल, दिस इज द एप्लीकेशन. अब ये पूछना चाहता हूँ, डू यू हैव एनी आइडिया? एप्लीकेशन है तभी जिंदगी में मजा है. अगर आपको बैटरी देखा है, एप्लीकेशन पता नहीं है, वेदर इट इज फॉर इंडस्ट्री और योर कहीं जनरेशन पार्ट में है या पोर्टेबल घर के लिए होता है, तो दिस इज द पर्टिकुलर एप्लीकेशन. इज इट क्लियर? ओके सर. ट्रैक्शन में यूज होता है सर. है डेटा से इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में यूज होता है. और कहाँ होता है? इसको पता है क्या देखा? निकल कैडमियम एनी स्टोरेज में यूज होता है. व्हिच पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज फेमस और क्या कॉस्टिंग, क्या ऑप्टिमाइजेशन, कुछ there is a challenge. Is red color because we are from industry and power. That's why red is on demand. Now where is lead and where is nickel? Which industry preferably and क्यों? जब कोई पता हो तो कंप्लीट बताओ, नहीं तो बताने का कोई फायदा नहीं है. आप अपना इमेज खराब करोगे. आधा अधूरा सर पता है. गूगल इसमें देखने का कोई जरूरत नहीं है. डोंट सी एनी गूगल ड्यूरिंग द डिस्कशंस. नो नीड. मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना अभी, जब बोलेंगे तब. निकेल कैडमियम हम बताएंगे इसका क्या स्टैंडर्ड, क्या स्पेसिफिकेशंस. एट द सेम टाइम लेड एसिड्स. अभी फॉर द टाइमिंग इसको थोड़ा सा भूल जाइए कि हम कहाँ लिथियम, कहाँ सिल्वर जिंक, कहाँ फ्यूल सेल्स, वेदर इट इज पावर जनरेशन, छोटा मोटा हाई एंड एप्लीकेशंस, स्पेस or this silver zinc and portable power. But our focus, present focus is on these two. Wow. So 90% of the applications worldwide is lead acid. Because of these reasons, these are the major reasons. At the same time, the remaining some areas or 10% is on this. Those who have seen the steel plant, especially steel process plant के अंदर भी steel sectors, so steel plant के अंदर निकल कैडमियम दिया जाता है. कारण है उसके पीछे. कोई भी अगर drives, because most of the steel plant, those who have seen in your practical lives, कभी अगर जिंदगी में मौका लगे तो कभी दर्शन कर लेना. एनी सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनी स्टील प्लांट, स्मॉल और बिग, जहाँ पे बड़े से बड़े मोटर्स, ड्राइव्स, कंट्रोल, बोथ एसी एज वेल एज डीसी, एंड वहाँ डीसी मोटर्स का इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस, देयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ निकेल कैडमियम. And the cost and the durability is the least maintenance required, but at the same time cost is close to 3 times. Least maintenance, heavy, is the heavy applications. It is not heavy, the lighter silicate as required to the customers, but it is heavy. Its voltage is quite different, its standard is different, and ultimately the cost. So it is not always for all power. But at the same time, it is for industrial and the power and those who are from steel. But it is the low cost, abundant material, applications, versatility, and well-developed servicing and recycling infra based. This is the basic chemistry, how the lead oxide, PbO2, and sulfuric acids with the help of lead again, so PbSO4 and पानी का साथ हो Pb निकल रहा है. Water is the discharge reaction product and has a very important role in helping the to assess the state of charge of a cell at any point of time. So how this cell, जो बैटरी बात कर रहे सेल कैसे कब उसको assess कर सकते हैं, very easy, low cost, and you can easily test it. What test? Any idea about the testing of a battery on daily basis, on the routine basis? Specific gravity. Correct, absolutely right. So battery का routine maintenance में आएगा specific gravity. So certain meters are there
You have to just check these things, hydrometer, and you will see the particular value. Absolutely right, hydrometer. So this is the particular test on the routine checking. So how the strength of the sulfuric acids, and that can be measured by the single test and other voltage in the two terminals. So that is the focus for the major routine check. Distilled water भी डालना पड़ता है. That depends. If your specific gravity are not meeting the particular target, then distilled water. It is not daily. Daily नहीं. That is routine, 3 months, 6 months, based on the gravity, based on the voltage and the level of water. उसमें जो कैप करके रखा था रेट का उसमें देखना पड़ेगा. It is not daily, but it should be daily or weekly. You could measure. No. It should be weekly. So specific gravity and terminal voltage should be weekly mandatory. And all the service provider AMC people are coming, and that is their routine job. So it is not the substation people's, because battery plays a very, very important role in the substation. I hope Uday is also it is there. It is not your people, maybe outside the third parties, the manufacturer. So that is the job. So you have to understand jobs are there. Jobs are there in the market, but question is the knowledge, whether I am really fit, I am the person who could handle all the battery and battery charger. So that is the question. So it's a very big area, and upcoming area is battery. Upcoming focus, it is not the AC, it is the DC. It is a global need because of the pollution, illusion, and many other factors. It is green energy. There is least pollution, right? Straight away we are getting power. So next is nickel. How the nickel and cadmium is just nickel hydroxides. So it's like a potassium hydroxide presents electrolyte in very dilute form, which easily functions as an ion conductor. Although water gets consumed on discharge, the change in concentrations of the dilute solution is minimal and hence cannot be used as an indicator of state of charge. Whilst lead acid system has to overwhelmingly dominated the industrial applications worldwide, the nickel cadmium system too has served niche applications because of a few of its intrinsic characteristics which suit such applications very well. Some of these are here. Excellent charge discharge cycling capability, excellent. It's very heavy. Excellent recovery from deep discharge, compact, low weight. At the same time, the lead acid battery comes into two basic configurations, the flooded electrolyte versions. This is the end-to-end charge, end of charge. A large part of the energy supplied to the cell is dissipated in breaking of water and evaluation of gases, oxygen and hydrogen at the positive and negative electrodes respectively. The loss of water through electrolytes is unavoidable and hence a replacement has to be made periodically to ensure life as well as performance of the product. The rate of loss of water is a function of grid alloys and charging voltages, temperature, age of battery. This is the particular case. The sealed maintenance-free versions, this is more popularly known as valve-regulated lead acid, VRLA. So under the lead acid, this is the more popular name or known VRLA type. Now type of the lead acid. This again comes into two basic forms, absorptive glass mat technology and gel technology with flat or tubular plates. I'm not going into details much because we are not here as a manufacturer, but at the same time we have to use how the battery and its voltage can decide. So selection of battery and battery voltage. Which battery I will select? 24, 5 volt, 48 volt, 110 volt, 220 volt, and for whom and how. So how to select, what will be the data and for where with particular
design and engineering calculations.